हाय योगेश। हेलो सर। जय क्या हिंद हाल? सर। जय हिंद की हाल। बहुत बहुत अच्छा हैप्पी। हूँ सर, आप कैसे हो सर? मैं एकदम हाँ, मस्त, एकदम एज यूजुअल, हाँ। फाइटिंग फिट, गॉड हैज बीन काइंड। गुड। अभी ये लग रही है जेन्युइन स्माइल। पहले बता, ये 60,000 वॉट वाली स्माइल कहाँ से आई है अभी? है एनी रीजन फॉर दिस? सर, मैंने एनर्जी सोर्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो स्माइल आएगी। अच्छा, गुड, आई एम सो हैप्पी। परसों जब तूने फोन करके मुझे बताया ना कि सर एक गुड न्यूज देनी है, आई एम गिविंग यू द फर्स्ट कॉल, ऑल्दो one knew in the heart of heart, हम्म, but then it's always a pleasure hearing, directly from the horse's mouth. So when you said कि sir I'm all India rank one, see, it's numbers, rank है ना, मेरे लिए कभी मैटर नहीं करती। I always told you ना, it is for your own personal satisfaction. But that sense of achievement है ना, when you see कि sir, I had not thought, but I had worked hard for it, I have been able to achieve it, so my name is in the top in the list, in the SSB result for NCC entry. So that gave me happiness, वो मुझे अच्छा लगा। I was happy because you were happy. So heartiest congratulations. The journey has not been easy, Yogesh. As I always say, चाहे छुट्टी हो चाहे इनाम हो ना, it always has to be hard earned and well deserved. So in your यस सर। case, you had earned it hard and you actually deserve it. So heartiest congratulations. Good. Hmm? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर क्लास में फॉर जब तू एवरीथिंग। नॉट, हाँ, मैं क्लास में जब आई शुरू एम में जस्ट आता सेइंग था, थैंक यू सो। अरे डोंट हैव टू से यस थैंक्स, सर। आई ऑलवेज से इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी। क्लास में जब पहले जब तू आता ओके था, सर। मैं तुझे बोलता था बड़ी ढंग से बैठो, सीधा बैठो, टाई लगाओ। मंडे में हफ्ते में एक दिन हम लोग फॉर्मल्स में आएंगे हैं, और मैं टोकता था उन चीजों के लिए। यस सर। आज है ना, व्हेन इट इज रिलैक्स मोड, मैं रिलैक्स होकर के आज तू फॉर्मल पहन करके आया है। इट हैज बिकम योर हैबिट नाउ। है, ये सर, कल मैंने शाम को भी यही पहना हुआ था। पहले कितना टोका मैंने शुरू शुरू में। सीधा बैठो, टेबल पे बैठो, बेड पे बहुत मत ज्यादा बैठो, सर। पीठ पीछे मत लगाओ, सीधा बैठो ऐसे। सिर्फ बिल्कुल ऐसे बैठो, बात करनी है तो जोर यस से सर। बोलो। गर्दन साइड में मत लटको। कितनी बार टोका होगा? यस सर। हाँ, बहुत बार सर, बहुत बार। बट अभी तो बिल्कुल सही बैठा एकदम ऐसे है। नाउ यू बिकम फौजी। गुड। अब अबाउट टू बी। अबाउट टू बी नहीं, इट्स यस ऑलरेडी सर। डन। यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ सर्टेन यस। थिंग्स व्हिच आई टोल्ड यू। उतना ही है। यस सर। सुगेश, आज मैं तेरे को बोला, दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर आई एम कंडक्टिंग ना, लोग मेरे को कोई पॉडकास्ट या इधर उधर बात करता है तो आई एम फर्स्ट टाइम मैंने टेकिंग एन इंटरव्यू, बट जैसा मैंने हमेशा सिखाया है, एंड आई टोल्ड यू ऑलवेज टू बी अनऑर्थोडॉक्स, डोंट लेट गेट इनटू टू मच ऑफ प्लानिंग कि ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। पहले तो टुडे आई एम टेलिंग यू, यू कैन रिमूव योर टाई, है ना, रिलैक्स होके बैठ आराम से, निकाल दे। निकाल। ओके सर। हाँ, अब निकाल दे। टुडे आई एम गिविंग दैट लैटिट्यूड। आराम से रिलैक्स होकर के बैठ, एम इज टू टॉक, एम इज नॉट टू इम्प्रेस एनीवन। इट इज हार्ट टू हार्ट टॉक बिटवीन द मेंटोर एंड द मेंटी। ठीक है? यस सर। हाँ, ओके। योगेश, whenever I hear the interview, people say कि all India rank, this recommended candidates, है ना, आपकी जर्नी कैसी रही and all that. While we'll talk about certain issues, but at the same time, I am of the firm belief, जो मैं तुम लोगों को सिखाया हमेशा, यस सर। selection, rejection, all in the head. Select इतने से लोग होते हैं, reject इतने लोग होते हैं, है ना? So भारी तादाद में यस वो सर। लोग हैं जो है ना नहीं कर पाते हैं for whatever reasons. So unlike others, यस है सर। ना, who talk only of the success and how we went about it and all that, I think, and it is more important first to walk your talk. So we will first talk about those, है ना, stances जहाँ पे we were not able to achieve what we wanted to achieve. We'll first talk about the यस सर। failures, and then we will discuss the road where, है ना, we started the journey, and from, so-called rejection, we landed up in a situation where your name is on the top. Okay? सर। सबसे पहले योगेश अपने बारे में बता। हालांकि आई नो, बट दोज गाइज हु आर गोइंग टू लिसन टू यू, उनको अपने बारे में बता। एंड आई वांट यू ओके। टू टेल इन टू फेजेस, ठीक है? नथिंग इज स्ट्रक्चर्ड, यू ओके डोंट सर। नो। मैं जैसा रहा हूं हमेशा, दो हिस्सों में जवाब देना, ठीक है? पहले जी वो सर। जवाब देना कि अगर मैं पूछता आपसे पहले कि प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर योगेश, तो आप पहले क्या कहानियां सुनाते थे, एंड टुडे व्हाट यू फील अबाउट योरसेल्फ। हाँ। ठीक है कि मैं पहले ऐसा ओके। था, ये मेरे जवाब होते थे एसएसबी में, एसएसबी के हिसाब से। अब दूसरा कि भाई मैं ये हूं और दिस इज व्हाट आई एम टुडे। दो हिस्सों में जवाब चाहिए मुझे। प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ओके सर। सर, if I talk about my previous time, what I used हाँ, to do and what I was, so I was the kind of guy who used to plan, who used to think that what the a person in front of me must be thinking about me when I am giving certain answers. So this was
But I'm not boasting, or I'm not just saying anything about you. But I just want to say one thing here, that you were the one, like when I started talking to you, the fear inside me of facing the failure or facing the thing which can like hurt me has gone. Because when I started talking to you, you just motivated me to get like to how to just handle the failures first of all. So like initially what I used to do, I used to plan the answers like my weaknesses. I used to call you and I used to ask you, sir, what are my weaknesses? I used to ask you, sir, what should I answer for this? Although I knew the answers, but why I was asking you, because I was thinking that if I'll answer these questions, so maybe the interviewing officer must be thinking something else about me. So like when I just like got your guidance, and like you just guided me in the right path, that all the answers lies within yourself, but you just need to structure and you just need to give a proper answer. Then like suddenly there was a change of mindset which was required. And then I won't say I just changed within one day or 1 month. It took time with you. You have given me a lot of time. I still remember when you were driving somewhere from like your home, it was 6 to 7 hours. We were on the call and you used to guide me. Yogesh, you need to structure. Don't change your answer, but structure your answer. So those things were there. And honestly, sir, I'm telling you in this platform, that this time when I entered the interviewing hall, I was not having any fear that I'll make it or not. I was just feeling like whatever will be there in my mind, I'll just say it on the face of interviewing officer. If I'll have it in me, maybe I'll go. और अगर नहीं होगा तो मैं वापस चला जाऊंगा. और जिसको मैं अंबर से बात कर रहा था, I was just saying, भाई नंगा हो जाओ अंदर जाके. Yeah, जो होगा get देखा naked. This is जाएगा. what I So told I you. just did this. I just did this because you just motivated me, because मेरे अंदर इतनी courage नहीं थी अंदर जाके कि मैं नंगा हो जाऊं जाके वहां पे. But that courage has been given by you in my heart, and that was a major factor why I could give good answers in interview. And I'm happy. But first time when you had gone and they asked you, can I tell 3 bad habits about your interviewing officer, about your mentor? Bloody Kaddu. I just created hell. I was driving for 7 hours. Priya was sitting next to me and 7 घंटे मैं तेरे को बताता रहा है कि question answer we kept on discussing 7 hours. And वहां जाकर के you said कि sir he talks a lot when he is driving. Yeah, that was good. This is not a bad No, habit. that was not good. No, That it was not good. It is actually not a good habit. Yes, Huh? but the intention behind that was good, sir. Everyone doesn't That have is what that I'm telling intention. you. The intention you meant good to me कि सर वो आदमी गाड़ी चलाते चलाते 7 घंटे ना मेरी ट्रेनिंग करा रहा था वो ठीक नहीं है. So that Sir, was I your have concern, been, but good. sir, right now I just want to mention one thing, because this was my like 8th, 9th attempt, and I have been to different coaching academies. I won't name them. I have gone to Allahabad, I have gone to Delhi, Chandigarh, and some online courses also I have opted. Like I never have got such a mentor who is just giving his time, who is not only like giving his time, but he is also concerned not only about selection but also about the family issues. I still remember when I had some family issues with my parents, I used to call you and I used to ask, sir, what should I do in this scenario? So you used to guide me, talk to your parents, talk to your father, say this to them. So that kind of guidance and that kind of connection which you built with me, that was something which I never ever have seen, not only between SSB mentor or like a student, or like neither with any teacher or student of school or college. So that kind of relation which you built with me, that itself has created motivation in like in me. So that is priceless. Even if I'll pay 10 lakh of rupees to anyone, that can't be achieved or that can't be received from anyone. So that kind of like, I actually feel like you are my CEO and I am your cadet. So that is the biggest compliment, Yogesh, and it has to be hard. But I'm so very kind of you having said so. But Yogesh, this is all about being a family. That's why I tell you, कि let's not call ourselves batches, है ना? Let's call it a family. And not only about me, यार, बाकी अपने group में जितने भी हैं family में. अभी now when you had gone for the medical, you stayed with Gaurav, है ना? You stayed Yes, at sir. Vikas place. Both of them they had gone, है ना? For you for the medicals, कि हम साथ चलते हैं वहाँ तक, है ना? His mother Yes, sir. having a cake cutting for you, Uh-huh. सब अलग अलग जगह से बैठे हुए हैं. But wherever you had gone, and people are coming and going, they came and they met you. है ना? And वो अपनापन है कि यार आज साथ में रुकेंगे, आज साथ में खाना खाएंगे. We actually stay like a family, ना? And they people also had contributed a lot. So there are some, You know? yes,
and it means a lot. And Like which until unless, even you don't know. Like, huh? yes. Actually, Kritika, Yuvraj, we and sometimes Krishan also, we used to conduct the classes पता है and मुझे, we used I to know just keep it secret from you. That I, there you are no know, okay. secrets. There are no So what secrets. we तुम्हें used ये to भी नहीं do, पता. we used, कई बार ऐसी चीजें होती है. I only initiate it, but I stay out of it. I don't want you to know. okay, I am doing this. It is something like I okay, tell okay. someone, you take initiative, do this thing. So, Within a sir, group this is also, I'm we talking make about two the groups. family. Somebody is senior and Yes, you make buddy pairs also. ठीक है, कोई शर्माता है, कोई बहुत ज्यादा बोलता है, you make a buddy pair ना, you help out each other, no? And yes, sir. जब I'm just तक talking मुझे about the पता है family. family issues हैं, जब तक है ना, तो how you are going to focus on your training? You tell me, है ना? Yes, sir. And it gives Sir, me I just personally a lot wanted of to tell you about the confidence. family. Hmm. Yeah. So I just wanted to tell you about the family which you started talking about. हाँ. So like when I was about to have my interview, I think I was having a week left. So I used to just call Kritika at 10 p.m. She used to had her meetings and she was like, okay, I'll just be there within 5 to 10 minutes. And I used to call Yuvraj, Krishan, we used to there. And what they used to do, they used to, like I used to send my PIQ to them. They used to ask different questions from three sides. Like, okay, tell me something about yourself. Tell me about Riva. Tell me about White Tiger. So like it was, although a kind of practice, I used to have 3 interviewing officers simultaneously in one place. So that was something else. And sir, when you used to give us homework of GPE, group planning exercise, so what we used to do, like Yuvraj, Kritika, sometimes Gaurav, Vikas, all like sometimes like 10 members, 7 members, whatever members we will be there. What we used to do, we used to take that and like as you said, कि पहले वो 4 मिनट देखना, पढ़ना 10 मिनट, फिर ऐसे करना. We used to do that and एक आदमी कोई वो टीचर बन जाता था कि हाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ. And then we used to do like हाँ चलो पूरा करना है, कल सर यही वाला करवाएंगे. So sir, that family type of feeling na, I never ever have got anywhere. And when I landed there in Lucknow, so Vikas called me. Vikas was like, मैंने बोला मैं होटल में रुक जाऊंगा. Vikas was like, नहीं मेरे घर आ जा भाई, 1000 तू रुपए देगा कोई बात नहीं, पर when you will come here na, you will feel better. So I just he just came to take me. I think his home was 15 kilometers from there. तो वहां पे आया, लेके गया, and the reaction of her mother, I was not feeling like she is Vikas's mother. I was feeling like she is my mother. She was taking care of my food. She was taking care of my beddings, everything. And when I just made it, she was crying in tears. And that moment I can never forget in my life. So, this is not about the class. This is not about the batch. And this is not about the mentorship. This is all about the family I had. I'm really, really, really very blessed to have the family and not the mentor, the guru like you. Mentor is a different word. The Guruji. Like A you. lot of people they started calling you Guruji. अब मुझे लग रहा है गुरुजी के साथ में ना दाढ़ी बहुत लंबी बड़ी कर लेता हूँ. But Yogesh, the Sir, idea is बिल्कुल this कर only. लो. When we talk Yes, sir. about the batches and all this thing, ना वो 14 दिन, 15 दिन, महीने भर में खत्म हो जाता है. Nobody stays in touch. Even if they stay, it is only the commercial value. यार कुछ story share कर लेना, कुछ बताया, कुछ notes हैं तुम्हारे पास share कर लेना. We have been handling into each other's and both professional and personal. We had always been concerned. अपने पूरे क्लास में आके फैमिली में 40 लोगों में किसी एक को प्रॉब्लम है, वो खुल के सबके सामने बता देता था कि सर मेरे घर में ये प्रॉब्लम है. And then everybody used to talk to him, या कोई हौसला बढ़ाना है, कोई बात है. So and it is a lifelong relationship, है ना. One should always invest in relationship. अगर 14 या 30 दिन के बाद में अगर तुम लोग मेरे को याद नहीं करो, ठीक है, and you just remember me as a number or I remember you as a number, I think it was wastage of time. SSB is just one small exercise in life, यार. Yes, sir. Life is much beyond SSB. अभी मैं कुछ चीजें पूछूंगा, मुझे बिल्कुल जो महसूस करता ना योगेश, वो दिल खोल के बताना. बिल्कुल सर. अच्छा, एक मजेदार चीज पहले मैं बताता हूँ. मेरे को पिछले 2-3 दिन में 2 कॉल आए, 1 बॉय एंड 1 गर्ल. Okay. कहते सर एक चीज बोलूं आपको, आप बुरा नहीं मानना. मैंने नहीं मानता, बोलो. मैं यंगस्टर्स की बात का मैं कभी बुरा नहीं मानता. इवन इफ यू वांट टू अब्यूज मी, नो वरीज. ठीक है, बुरा नहीं मानूंगा, पक्की बात है. कहते सर मैंने आपका पहला वीडियो देखा ना, तो मुझे लगा अच्छा मार्केट में एक और आया है. ओके. कहता फिर मैंने कहा ठीक है, शुरू में सारी ऐसी बातें करते हैं, मैं थोड़ा देख लेता हूँ, है ना. अभी थोड़े दिन उछलेगा, उसके बाद देखते हैं. कहते सर फिर मैंने दूसरा वीडियो देखा. मैं ओके. कहते हैं उसके बाद फिर मुझे लगा ठीक है, बात तो ठीक सी कर रहा है, बट फिर भी ना शुरू में थोड़ा लोग उछलते ही हैं, है ना. देखते हैं कब तक फुदकेगा. तीसरा भी देखते हैं. मैं फिर कहता सर आई हैव बीन फॉलोइंग यू विद द सेम थिंकिंग पैटर्न अबाउट यू फॉर लास्ट 4 months. मैं देन कहता सर नाउ आई एम एडिक्टेड टू यू, आई कीप लिसनिंग टू यू. मैं तो फाइनली आई वन. कहता यस सर. मैं हैव आई चेंज? बोला नो.
मैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड बात सही भी है, बिकॉज है ना, yesterday also in one of the podcast I was telling, actually problem पता है क्या है, either people are preying on your है ना ambitions, everybody want to do well, है ना, there is certain aim one wants to achieve, so either they lure you in the name of recommended candidates, दो photograph, ठीक है, some छोटी सी story or something, or they play with your fear, बहुत मुश्किल है, तुमसे हो नहीं पाएगा, rejection rate is very high and all that, ठीक है, but जब failure की बात आती है, nobody talks about failure, ठीक है, everybody want to speak only about the good things. Now here is a team, both of us, we make family, we make a team. I will first talk about very basic thing, how we met, Yogesh, ठीक है, initial what was your mind thought, initially what was your aptitude and attitude in the class, how I used to handle you, ठीक है, सबको बता दिया, आपके लिए भी वैसे ही लागू है, या तेरे को अलग से, दूसरे को अलग से बताता था, तेरे को कितना आराम से प्यार से रखा मैंने, और कितने तेरे को छितर पड़े और किस लिए पड़े, ठीक है, Yes, sir. ठीक है, Okay. Okay. and what has been your experience, ठीक है, and also talk about your previous trainings. I am not interested in any name of the academy, it's fair to say, you know, from which location you have taken, you know, ठीक है, but Okay. for how much you know, how much time you had spent there, what was the level of the environment, and what difference you see, and when we trained together as a team and you had अपना trained there. So, I think it was December, 20th December when I met you, sir. अच्छा, There was याद one नहीं of है, the candidate, Parveen. He was Parveen. from Dogra Regiment. He got recommended for ACC. So he was my friend, and I was like, "Ki, Parveen, I am going for SSB. Like, what should I do?" So he just gave me your number. He said, "You know what, Yogesh, I think you have it in you, but आग नहीं है अभी थोड़ा सा, तो just call this sir." So he just gave me your number, and I just called you. So you just told, it was I think late in 11:30. So I think you didn't pick up the call, and in morning you called me back and we talked. So initially you asked me some questions, just as tell me something about yourself and where are you from, how many attempts you had, what do you think, what went wrong, these type of questions you asked. You also asked me some, you also have given me some bad words, Yes. and you asked for the answers. I wrote the answers and has sent it to you at that point of time only. And you also talked about the practice which I had for lecturate. Are you practicing or not? These kind of things. So I initially started talking to you, and I was feeling good. Actually, it was 20th of December, and I had my SSB of FCAT on 27th, and I was about to leave on 25th or 26th. I don't remember exactly. So I was having a time of 7 to 8 days to that SSB. So when I then I said this, that I want to join your family. So you given me permission, and I started the class from 20th or 15th. I'm not sure with the date. It was December only, I remember. So I started the class, and when I used to be there, I used to have the mindset of that. Yes, I should admit then. Yes, I'm superior to everyone. I used to have that this kind of mindset. मैं सबसे होशियार हूँ और बाकी सारे लोग, because I was repeater. मेरे को लगता था कि यार repeater हूँ, मेरे को सब कुछ आता है, पता नहीं select क्यों नहीं हो रहा हूँ. तो I used to have the mindset कि यार अभी ये लोग जो बाकी लोग हैं, तो maybe they are repeaters, but they are not having that much of experience which I have. So अभी एक I remember the scenario when Vikas wrote a story, and I just called it absurd in front of the class. मैंने बोला absurd. It is a really bad story. Although it was a good story when I think now. तो मैंने मुंह पे ही बोल दिया कि ये बेकार story है. So you didn't say anything at that point of time. You were like, okay. तो आपने दूसरों से feedback लिया. And when the class was over, you called me and you're like, Yogesh, what do you think about it? What you have done today? मैंने बोला sir, मेरे को अच्छी नहीं लगी तो मैंने बोल दिया. तो उन्होंने बोला, योगेश, there are ways to talk. There are ways to convey the things. I'm not saying कि तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो तुम उसको अच्छा बुरा बोलो या फिर अच्छा बोलो. Whatever you feel, you should speak. But there's a way to speak. There's a way to convey. At the like when you say something, anyone else which is there in class should not feel bad about you. So at that point of time, I felt really bad, like what I did. Then I called Vikas. I was like, I'm sorry, Vikas, sir. I should not have told this in front of the class. So he was chill person. He was like, अरे कोई बात नहीं, मैं तो भूल गया उसको. हाँ, मैंने बोला ठीक है, I'm really sorry about it. Then, sir, at that point of time मेरा ऐसा भी mindset था कि बहुत जल्दी ये aggression आ जाना, किसी भी चीज का उल्टा जवाब देना.
So I had my FKT SSB, and you asked me why you want to join Air Force. I was like, I was not actually. I didn't want to join Air Force. But मुझे बोलना तो था कुछ, तो आंसर तो देना था, तो I said I want to fly. You said if you want to fly, then you can buy a ticket of 2 to 3,000 and you can go and fly. So I said मेरी योगेश, यहाँ औकात पे नहीं है मैं सर. योगेश यहाँ पे मैं रोकूंगा. I'll tell you the exact word. You were in the interview and you never thought कि है ना I can be so different of a person है ना while taking an interview. I asked you कि मैं Air Force क्यों join करना चाहता है. Firstly है ना, see, I know inside about you. I know more details about you than you actually knew about yourself at that point in time. है ना. मैंने पूछा था Air Force क्यों join करना चाहते हो. आपने बोला सर Air Force तो मैं कभी join ही नहीं करना चाहता था. लेकिन वहां पे तो आपने बोला सर I always wanted to है ना join Air Force. It was my dream. मैं क्यों. तेरा जवाब हिंदी में था. तूने बोला सर मैं हमेशा उड़ना चाहता था. है ना. Okay. तो मैंने कहा था अच्छा Yes. पापा की परी बनना चाहता है. यू फेल्ट अनकंफर्टेबल, यू फेल्ट बैड कि यार इतने लोगों के सामने मुझे है ना बंदा ऐसे बोल रहा है. आई सेड पापा की परी बनना है. तो he said, नहीं परी तो नहीं हाँ. बनना बट उड़ना है. तो मैंने टिकट बड़ी सस्ती है आजकल, 1,500-2,000 रुपए में ले लो, शौक पूरा कर लो. देन यू फेल्ट अनकंफर्टेबल एंड एग्रेशन बाहर आया. यू सेड की औकात नहीं है. मैं चलो औकात पे बात करते हैं. अभी भाई आपने कोट पहन रखा है, कहाँ से आया, कितने का खरीदा. यू सेड सर एनसीसी का है. मैंने ट्राउजर्स बोला सर ये एनसीसी के. मैं शूज बोला सर वो भी एनसीसी के. आप अपनी बात पे अड़े हुए थे. मैं अंडरवियर वो भी एनसीसी का है. मैंने सर नहीं वो मेरा अपना है. This is how it went off. You were hard, you were aggressive. I am shade more aggressive. But this is how it unfolded that day, you know. Yes sir. And जब वो So रिव्यू दिया I, उसके समय फिर तुझे रियलाइज होनी चाहिए. हाँ बोल आगे बोल. तो वो जो आप बोलते हैं ना छित्तर परेड, तो छिहत्तर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियली फेल्ट बैड. उस रात में सो नहीं पाया. मुझे लगा यार मैंने इतनी एसएसबी दी और आज तक कभी किसी ने इस तरह नहीं बोला. इतनी कोचिंग में भी गया तो ऑल्दो दे हैव गिवन मी द फीडबैक कि हाँ तेरा यही सही है गलत है, बट किसी ने इस तरह नहीं बोल दिया मेरे मुंह पे कि यार ये तेरा गलत ही है, तू इस तरह कभी नहीं हो पाएगा. आई फेल्ट रियली बैड. आई थॉट कि अब मैं करूं क्या. तो आई टॉक टू वन ऑफ माय फ्रेंड शिवांगी. मैंने बोला यार क्या करना चाहिए शिवांगी. शी वाज लाइक, मैंने उस समय मैंने बनाया कि यार अंदर से फील नहीं आ पा रहा है उतना अच्छा, मतलब आई एम फीलिंग लाइक सही नहीं हो रहा है. तो शी वाज लाइक कॉल राजीव सर वंस अगेन एंड आस्क. अब मैं क्या करूं सर. ठीक है अब तो आप मुझे सब जान गए मेरे बारे में, मैंने खोल दिया अब अपने आप को. नाउ व्हाट शुड आई डू. देन आई कॉल्ड यू ऑन द नेक्स्ट डे एंड इट वाज आई थिंक 7-8 पीएम. हाँ यस. आई कॉल्ड. मैं सर अब मैं करूं क्या. तो you just gave me one answer and that was really very priceless like thing for me, that you told me one thing. Yogesh, do nothing, just follow a proper schedule. सुबह उठ के जाओ, दौड़ के आओ, घर में नॉर्मल थोड़ा बहुत काम कराओ, अपना पढ़ो लिखो, और दोपहर में थोड़ा आराम करो, फिर शाम को खेलने जाओ, फिर शाम को पढ़ो, जो भी थोड़ा बहुत आप ट्यूशन पढ़ाते हो ट्यूशन पढ़ाओ, फिर शाम को आओ, प्रॉपर थोड़ा सा खाना खाओ जितना खाना है. फॉलो शेड्यूल फॉर 1 week, you will feel the change in you. At that point of time I was not able to connect कि यार मेरा एग्रेशन और ये शेड्यूल ये दोनों बैलेंस कैसे होता है, ये चीज कनेक्शन क्या है इन दोनों का. फिर मैंने सोचा चलो लेट्स बिलीव इन हिम. एक बार इतने लोगों पे विश्वास किया, एक बार इन पे भी विश्वास करके मैं देखता हूँ. तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग इट. तो आई थिंक आफ्टर वन डे शिवांगी मेट मी. शी इज वर्किंग इन अ स्कूल. तो उसके बाहर मैं खड़ा था स्कूल के बाहर. तो शी केम. शी वाज लाइक योगेश तू बहुत काफी पतला हो गया. मैंने हाँ सही में. हाँ यार काफी पतला हो गया. मैंने अच्छा. तो आई गॉट कॉम्प्लीमेंट. मुझे अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ अंदर से. फिर मैं अपने कॉलेज भी गया क्योंकि मैं 1 वीक का मेरे कॉलेज में वेकेशन था. मैं कॉलेज गया, कॉलेज में दोस्तों ने भी बुलाया, काफी पतला हो गया है. अंदर से अच्छा फील होने लगा. तो जब अच्छा फील होता है तो दिमाग में ऑलरेडी गुस्सा नहीं होता. फिर मैंने जो डाइट पे सब बाहर खाना तो वही बंद कर दिया. तो आई यूज्ड टू ईट हेल्दी ओनली, जो घर का है थोड़ा बहुत. तो पैसे बचते थे मेरे पास, जो बचते थे पैसे तो कभी खर्च का ज्यादा टेंशन नहीं होने लगा. तो उससे भी थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स होने लगा मेरा. तो नाउ आई एम एबल टू फाइंड आउट कि उससे एग्रेशन का क्या अंतर है. क्योंकि जब जब चीजें कुछ नहीं होती हमारे पास तो एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन होता है. जब चीजें हमारे पास होती है तो ऑलरेडी मन शांत हो जाता है. सो दिस वे आई स्टार्टेड गेटिंग काम. आई एम नॉट सेइंग कि मैं बिल्कुल एग्रेशन नहीं है मेरे अंदर, है बट टू अ सर्टेन लिमिट. तो उसके बाद आई स्टार्टेड फीलिंग द चेंज. नाउ व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंस इट क्रिएटेड इन दिस एसएसबी. Sir, in my batch, in my GTO group, we were 8 people, out of which 3 got recommended from my group only. So, what used to happen? The people in GTO were like, "कि डब्बा मेरे को दे, वो the load which has been given, वो डब्बा मेरे को दे, फट्टा मेरे को दे." तो पहले शुरुआत में मुझे लगा कि लोग, आई एम नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू लाइक गो इन द GTO. अंदर से गुस्सा हल्का फील हो रहा था कि यार कर क्या रहे हो आप, मेरे को तो कुछ थोड़ा सा तो करने दो. सो दिमाग पे थोड़ा सा ये चलाया कि यार ठीक है आप फट्टा बल्ली लेके पुल बना लो, क्योंकि पहला पीजीटी तो बहुत इजी होता है, सबको बन जाता है. ठीक है आप बना लो, कोई बात नहीं.
व्हाट आई डिड, वो एक लोड था सर, काफी भारी था, करीबन 20-25 किलो का था, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा था, सब पुल पुल बनाने में लगे हुए थे आगे। आई जस्ट उसको उठाया मैंने बाहुबली स्टाइल पे, कंधे पे रखा ऐसे करके, मतलब अब चलो। तो मैं आगे आया फर्स्ट वाले के पास, सेकंड वाले पे सब सोच रहे थे खड़े होके। तो देयर वाज वन गाय चेस्ट नंबर 25, हिज नेम वाज नवदीप, हिज फादर वाज आल्सो सीईओ। तो मैंने बोला उसको, भाई नवदीप यार, ही इज 6 फीट टॉल, लाइक 6 फीट 2 इंच का, जिम जाने वाला, डोले शोले खूब। मतलब नवदीप यार मेरे पास एक आइडिया है, आप इसको पकड़ो, इसको लोड को मैं आइडिया इंप्लीमेंट करता हूँ। उसने लोड पकड़ा, तो मैंने आइडिया इंप्लीमेंट किया। तो मैंने देखा जब मैंने एक बार आइडिया इंप्लीमेंट किया, तो उसके बाद लोगों की नजर में शायद क्या हुआ, लोगों ने मेरा सुनना थोड़ा थोड़ा चालू किया कि हाँ यार इसके पास Perception आइडिया changes. तो है, कुछ बोल तो रहा है ये। हाँ, तो आई स्टार्ट। उसके बाद जब हम थर्ड पीजीटी के थर्ड ऑब्स्टिकल में आए, तो नीदर आई नॉर एनीवन वाज हैविंग एनी आइडिया ऑफ व्हाट टू डू फॉर फर्दर, लाइक यू नो प्रोसेस। तो बाकी सब खड़े होकर सोच रहे थे कि क्या करना है। एवरीवन वाज टॉकिंग टू ईच अदर कि यार ये फट्टा लेके ऐसा कर सकते हैं, लाइक ऑल्दो दे वर, मुझे ऐसा लगता है जो पर्सनली, मैं ये नहीं कहता कोई सही था या गलत था, मुझे ऐसा लगता था दे वर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस जीटीओ, क्योंकि जीटीओ में पास में बैठे हुए थे। मैं और बाकी मेरे जो दो बंदे थे, हम 3 लोग आगे खड़े हो गए, हम ये सोच रहे थे कि अब आगे करना क्या है। तो व्हाट आई डिड वाज कि वो फट्टा बल्ली लेके मैं हाथ लगा लगा के देख रहा था यहाँ पे सेट होगा कि नहीं होगा। हो रहा है, हाँ हो रहा है, आगे लगाओ, अच्छा यहाँ पे बन नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, हटाओ, चेंज, यहाँ पे लगाओ, अच्छा ये सेट हो रहा है, हाँ बन गया प्लान। सर वी हैड अ प्लान। उसके बाद जब मैं चढ़ता हूँ तो जीटीओ बोलता है कि नहीं ओके टूट गया, अब नेक्स्ट बताओ। सर नेक्स्ट, चलो फिर ठीक है। तो हम तीनों लेके मिलकर रस्सी बनाई, रस्सी लेके फिर एक पुल बनाया। तो वी वर फोकस्ड ऑन द ये जो प्रोसेस, नॉट ऑन टू हाउ टू इन्फ्लुएंस जीटीओ और क्या बोलना है। काम बोलने पे फोकस नहीं चल रहा था जीटीओ में, फोकस चल रहा था काम आगे बढ़ना कैसे है। सो वो वाला जो माइंडसेट है ना, वो यहाँ से आया जब मन शांत था। नहीं तो पहले से में क्या करता था, मैं भी बोलता ही रहता था कि हाँ हाँ वी शुड मेक प्लान। एक्चुअली सर दूर से देखने में जब आप पीछे खड़े हो स्टार्टिंग लाइन के, तो लगता है कि हाँ पुल तो बन जाएगा, पर जब आप वहां पे एक्चुअली में जाते हो तब लगता ही नहीं कि ये कैसे बनेगा, ये तो डिस्टेंस ज्यादा है यहाँ से। सो वहां पे ये चीज समझ में आई कि अगर मन शांत है तो आदमी काम कर पाएगा। काम कर पाएगा. That तो is so very जीटीओ में true. यहाँ हेल्प मिली। हाँ, उसके बाद सर एक जो डिफरेंस और मुझे समझ में आया, पहले तो मैं बहुत स्ट्रेस रहता था कि मैं उस पे लेक्चरेट में क्या बोलूंगा, कैसे होगा लेक्चरेट मेरा। तो आई यूज्ड टू प्रिपेयर 70-80 लेक्चरेट्स फ्रॉम होम कि भाई इंडो पाकिस्तान रिलेशन, इंडो यूएस रिलेशन, ये वो घर से बना के जाना है। दिस टाइम आई वाज एक्चुअली unprepared, even though I was not even like willing to go for SSB. As I told you, you were the one who were like नहीं जा SSB में, क्योंकि थोड़ा like उसका भी इशू था, सर्टिफिकेट का भी। एंड जब सर्टिफिकेट का इशू था, और सर हाँ वन मोर थिंग आई शुड नॉट फॉरगेट नीलेश। आई वांट टू टेल एवरीवन दैट ऑन द डे ऑफ माय रिपोर्टिंग वाज 28 Feb। तो हम 27 को रात को पहुंचे, हमने एक होटल लिया एसएसबी सेंटर के पास। तो मैं और नीलेश इज आल्सो फ्रॉम आवर फैमिली, वी टुक अ होटल रूम। तो हम रात को रुके, और रात से मेरे को लूज मोशन चालू हो गए सुबह तक। तो सुबह आई वाज लाइक यार नीलेश मैं जा नहीं पाऊंगा, नीलेश तू जा एसएसबी देने, ऑल द वेरी बेस्ट, आई शुड जस्ट बी हियर एंड मैं शाम तक मैं घर चला जाऊंगा। ही वाज लाइक नहीं यार बिल्कुल नहीं, तुझे चलना है। तो ही इज अ ग्रेट मैन सर, वो मेरे को कंधे पे ऐसे टगा के लेके गया एसएसबी सेंटर तक। एसएसबी सेंटर वाज ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर फ्रॉम देयर। इट वाज 5 AM इन द मॉर्निंग। आई लैंडेड अप देयर एंड व्हेन द रिजल्ट ऑफ स्क्रीनिंग वाज अनाउंस्ड, सो आई वाज देयर इन वॉशरूम। मैं था ही नहीं स्क्रीनिंग के रिजल्ट पे। मैंने उसको एनसीओ सर थे उनको बताया था कि सर मेरा थोड़ा Stomach हालत upset खराब है. है, मैं जा रहा हूँ। Hmm. हाँ, तो आई जस्ट वेंट देयर। सो आफ्टर व्हेन आई केम देयर, तो आई गॉट टू नो कि आई गॉट स्क्रीन्ड। So this was the thing, the feeling of family sir again। नहीं तो सर बाकी जो वो होते हैं ना शुरुआत वाले जो फर्स्ट डे मिलते हैं, वो अपना जा रहा है, कोई रूम में नहीं है, ठीक है आना है तो आओ, नहीं आना है तो बताओ, कंपटीशन कम होगा। बट ही वाज द मैन लाइक हु टुक मी टू द एसएसबी सेंटर, हु वाज लाइक कि यार तू चल कोई बात नहीं, होगा होगा होगा, अरे चल कोई बात नहीं। सो दैट वाज द फीलिंग। नाउ कमिंग बैक टू लेक्चरेट सर। तो लेक्चरेट सर 80 टॉपिक मैं प्रिपेयर करके जाता था, डिफरेंट डिफरेंट की माय फैम, लाइक लोवेस्ट से लेकर हाईएस्ट तक, माय फैमिली, माय फ्रेंड, माय टीचर से लेकर इंडो पाकिस्तान, इंडो यूएस, H1B वीजा। दिस टाइम मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया। जब लेक्चरेट का सर चिट आया हाथ पे, तो देखा डोनाल्ड ट्रम्प, टेलर स्विफ्ट, डाउरी सिस्टम एंड वो यूरोपियन यूनियन एंड ब्रेक्सिट। तो पहले तो मैं आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर टेलर स्विफ्ट। आई वाज जो तुझे फीलिंग लाइक पता ही कि ये नहीं है स्विफ्ट कौन है. बैन है जो रशिया के ऊपर लगा है। आई वाज नॉट नोइंग कि टेलर स्विफ्ट इज अ सिंगर। I know, तो मुझे पता है. 2.5 मिनट तक मैंने प्रिपेयर किया कि स्विफ्ट, 2.5 मिनट तक मैंने प्रिपेयर किया कि स्विफ्ट बैन हैव बीन इम्पोज्ड ऑन रशिया, इट इज बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल ऑन डाउरी सिस्टम।
तो व्हाई शुड आई गो फॉर द हाई लेवल टॉपिक? ये लोगों ने बहुत दिमाग में बना रखा है कि यार हाई लेवल बोलोगे तो अच्छा होगा। व्हाट डिड आई तो टीच यू? देन आई फेल्ट कि जिसमें व्हाट डिड कंफर्टेबल हो उसमें बोलो। हाँ, मैंने बताया है कि डोंट गो बाय नॉलेज नहीं दिखाना आपने। जिस चीज में खुद का हम्म, मन टिकता है, जिसमें आपको सहूलियत महसूस होती है कि इसमें मैं अच्छा बोल पाऊंगा कॉन्फिडेंटली, चाहे वो फिर माई फ्रेंड ही हो, आप उसमें बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही तो सर, दैट इज ठीक है ना? दैट इज व्हाट आई वाज अबाउट टू टेल यू सर। ढाई ढाई मिनट बाद वही एक आवाज आई दिमाग पे कि यार मैं तो उस पे कंफर्टेबल ही नहीं हूँ, रशिया यूक्रेन। और सर ने भी यही बोला था कि यार जिस पे तू कंफर्टेबल है उस पे बोल। जब मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे टीचर भी मेरे को ये बोलते हैं कंफर्टेबल नहीं, तो मैं इसमें बोल के करूंगा क्या? तो आखिरी के 30 सेकंड में मैंने सोचा चेंज द प्लान, डाउरी सिस्टम। तो डाउरी सिस्टम तो एक्चुअली सिर्फ इतनी बार मैंने ऑलरेडी कॉलेजेस में डिबेट्स किए थे उसके ऊपर, तो मेरे को ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आई एक्चुअली वेंट अनप्रिपेयर्ड, मैंने 3 मिनट कुछ किया ही नहीं एंड तरीका भी अल्टीमेटली। कितना सिंपल मैं है, वहां पे आई गया, टोल्ड आई यू। स्टार्टेड विद लाइक दिस। कोई भी लेक्चरेट जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में आपने लिखना है, और ये 3 लाइन जितनी एक माचिस की डब्बी होती है उतने में पूरे लेक्चरेट का कंटेंट आना चाहिए। दिस इज व्हाट आई ट्रेन्ड यू। एक मैच बॉक्स के बैक बिल्कुल साइड के ऊपर बिल्कुल यू सर, शुड तो बी मैंने एबल वही टू की राइट द पॉइंट पे। एंटायर लेक्चरेट, यू नो। हो गया? क्या सर? तो व्हाट आई डिड, आई व्हेन आई जस्ट वेंट फॉर द लेक्चरेट, आई जस्ट टोल्ड अबाउट द एंशिएंट प्रैक्टिसेस ऑफ दिस। एक्चुअली सर वन मोर थिंग, लोग बोलते हैं ना इंग्लिश हिंदी। तो मुझे उस समय ये प्रैक्टिसेस का हिंदी, सॉरी प्रथा का इंग्लिश नहीं आ रहा था। मैंने बोला प्रथा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरे को याद ही नहीं आया। मैंने बोला सो दिस इज अ वेरी एंशिएंट प्रथा इन आवर इंडियन कल्चर। ठीक है, तो कोई आई जस्ट सेड, प्रॉब्लम मेरे नहीं है। को मैंने आपके मेरी बात बुरी दिमाग पे थी कि इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं है, जो है मन से आना चाहिए। तो आई जस्ट बरियर नहीं टोल्ड होना अबाउट चाहिए इट लैंग्वेज का, वाज। यू नो। हाँ हाँ, ये सर मीडियम हो आई सकता जस्ट है अपनी टोल्ड देम बात कन्वे अबाउट। करने का, बट इट शुड नॉट बिकम योर लिमिटेशन। कि आदमी रुक ही जाए, यस वो सर। वर्ड सोचने लगे। बोल दो प्रथा यार, एक वर्ड से अगर गाड़ी रुक रही है, मूव ऑन। नहीं? Then I told about then I told about Sri Ram, that it started from that time. Then I came in the like middle scenario of a medieval history. Then I came in the modern scenario. Then I also told about what is the negative side of dowry system, why people are demanding it, what is Article 498A. तो ये सब बताने के बाद I concluded, and मेरी एक पर्सनल आदत बन ओपिनियन। चुकी है, हाँ, लाइक मेरी एक आदत बन चुकी है एज एम एनसीसी कैडेट। तो मेरा एक लास्ट में कंक्लूजन बनता है, तो डिबेट्स का कर करके मैंने एनसीसी में बहुत सारे डिबेट्स किए हैं। So finally, friends, I just said this. Finally, friends, I would like to tell you one thing, that it can't be cured till we won't do anything. So it is we youth who will get married very soon. So we should join hands together, and we should not take any dowry from anyone. So this was the line, and I said thank you, Jai Hind, and I sat there. So इतना करके मैं बैठ गया टेंशन फ्री होके। देन एक और वो होता है मिथ सर कि पहले क्या होता था, मेरे को कभी जब कमांड टास्क होता था पहले, तो मैं हमेशा डरता रहता था कि यार कमांड टास्क पे जब मैं जाऊंगा तो जीटीओ विल आस्क समथिंग फ्रॉम मी। तो आई यूज्ड टू आंसर लाइक दिस। ही यूज्ड टू एवरी टाइम, लाइक लास्ट टाइम आई व्हेन आई वेंट फॉर एफकैट पल्ला, तो सर आस्क्ड मी कि ओके लाइक व्हाट आर योर हॉबीज। आई टोल्ड देम कि मेरी हॉबीज थी नहीं एक्चुअली, मैंने लिखा हुआ था उस पे रीडिंग बुक्स। यार व्हाट बुक हैव यू read recently? I said, oh, Alchemist. So उन्होंने बोला Alchemist. Tell me something about Alchemist. I was like, sir, Alchemist is the book which has been written by some foreign author, and it is a good book, sir. This was my answer. This was my answer. So all like you can easily understand कि अगर कोई ऐसा आंसर दे रहा तो उसको कितना पढ़ा होगा उसने उस बुक को। So this time when he asked me, like this time he asked me one question, like Yogesh, apart from your father is in BSF, what drives you to join forces? And this time I spoke from my heart. I explained it to him for 10 to 15 minutes before my ये command task. I told him in the 4 points जो मेरा दिल में फील होता है, जो आपने बोला था कि योगेश जो दिल से फील होता है वो बोल देना। तो आई टोल्ड हिम अबाउट माय ग्रैंडफादर। मैंने बताया कि मेरे दादाजी थे, उन्होंने 65-71 का वॉर लड़ा। पाकिस्तान का 10 रुपए का नोट उनके अलमारी में फ्रेम्ड रखा हुआ है। तो आई यूज्ड टू सी इट इन माय अर्ली चाइल्डहुड, एंड देयर वाज आल्सो काइंड ऑफ मोमेंटो, टैंक का था, टैंक जैसा। So I used to play with it from my early childhood. So that was a kind of thing which is there since my childhood only. And whenever I used to go out with my Nana ji, Dada ji, so look was like कि अरे फौजी साहब आ गए, अरे जय हिंद साहब, अरे नमस्ते भैया। So this was the thing. People used to respect them. So जब मुझे लगता है कोई किसी की इज्जत इतनी ज्यादा है, तो वो इज्जत मुझे क्यों ना मिले? I just told it in these words only. मैं हिंदी में बोला सर कि जब किसी को इतनी इज्जत वहां पे मिल रही है तो मुझे वो इज्जत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? That is why I want to join defense. Now sir, the second scenario. So when I started living with my father, so we started living in Delhi. So my father did 2-3 RD parades, and he used to take me with him, and I used to sit with sit in chairs, वो राजपथ के बगल वाली chairs जो होती। So जब भी एक contingent पास होता था सर,
तो आई यूज्ड टू फील लाइक जो लोग हैं चेयर्स पे खड़े होकर तालियां कर रहे हैं, हूटिंग मार रहे हैं, स्क्रीमिंग, एवरीवन वाज लाइक द ऑरा वाज टोटली डिफरेंट, and that aura used to give me the motivation, the driving force, and that is why I want to join defense. The And third finally, I then you explained. landed up at the same Rajpath and got it from directly from Prime Minister's this Yes, thing. And that was a different moment. this was third answer. मैंने बताया मैं 4 आंसर दिए, मैंने तीसरा आंसर ये दिया. He said Yogesh, that is I think we are going on time bar after 60 seconds and we need to reconnect again. okay, है ना? sir. We'll do the same. It's We'll do on, the same. No worries. It's on Zoom now. So So I'm 40 minutes. disconnecting Yes, sir. here and I connect again. Okay? Okay, sir. Sure, sir. Okay, dear. Just allow me some moments. Okay.